अगर ये शाहरुख खान था तो भाई ये सलमान खान भी है भाई। अब वो आप ऊपर नीचे कर ले वो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज है, बट बोथ ऑफ देम गोटेड। ब्रेड बटर हमारी चाय बिस्किट है यार, चाय पाली जी के बिना जिंदगी कैसे जिए जाए। प्रेशर कुकर में प्रेशर 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 बढ़ रहा है, आप प्रेस कर रहे हो, हर मैच में प्रेस करो, एक पॉइंट टाइम पे सीटी बजनी है। It's a very controversial question, but there are few players that I definitely would want, especially given our injuries. वो ऊपर का बटन बंद करिए, शर्ट को सही करिए एंड आराम से। No. So my fear or my hope is that we keep continuing the remontada, but एक दिन ऐसा जरूर आएगा because law of large numbers कि हम नहीं कर पाएंगे, और हम जब 1-0, 2-0, 3-0 डाउन जाएंगे तो हम उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो as far as I'm concerned, I prefer a 1-0, 2-0 straightforward lead from the front kind, but ये रियल मैड्रिड के मेंटालिटी में नहीं है, ये उनके डीएनए में नहीं है कि वो उतरे एक पिच के ऊपर और 90 मिनट्स एक ही तरह के से खेले। उनको चाहिए थोड़ा दो पंच वहां से मारे तो आप दो पंच मारे, तो they like winning this way. This is the way extra kick जो बोलते हैं ना, extra kick kind of comes in there, and again every club has a DNA. मैं agree करता हूँ for sure, और कहीं ना कहीं I think meanwhile बार्सिलोना जहाँ का पर्सपेक्टिव भी हम डिस्कस करने वाले, लेकिन डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा उनका विक्ट्री वाज हिस्टोरिक। एब्सोल्युटली स्टनिंग फीलिंग यार अंकित भाई, फॉर अ टीम जिसको हमने पिछले 9 सालों में नहीं हराया एंड पिछले 4 मैचेस में गोल स्कोर नहीं किया, पिछले 6 मैचेस से लॉस ली, पिछले 7 मैचेस में वी हैड जस्ट 1 ड्रॉ अगेंस्ट देम। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो द विन इज ह्यूज, द विन इज मैसिव। एज अ बार्सा फैन, एज द होल फैन बेस, मुझे पता है दे आर सेलिब्रेटिंग द विन, बट वी हैव टू रिमेंबर इट्स नॉट अ टाइटल, कोई चैंपियंस लीग नहीं जीते, इससे कोई आप सुपर कप नहीं जीते हो, इट्स अ विन। But that win has bolstered our faith in our team जो हांसी फ्लिक कर रहे हैं with these young players भाई। 4 21 साल के प्लेयर्स थे पिच पे, 2 17 साल के प्लेयर्स थे पिच पे। रिस्पेक्ट, that's what I think Hansi Flick has earned and has shown the world this is what Barca demands now। अगर if they are able to do this with majority of their first team players out यार, ओल्मो नहीं खेले, फ्रेंकी नहीं खेले, सेकंड हाफ में आते हैं वो by the way दोनों ही प्लेयर्स, और आउट है, इवन टर स्टेगन आउट है, इंपॉर्टेंट टॉप प्लेयर्स हमारे फर्स्ट टीम के आउट है। स्टिल we went through in this game and we had a great game and I think we just need to remember कि वो था, हो गया, पॉइंट्स आ गए, नेक्स्ट पे फोकस करना है एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ। अगर ये शाहरुख खान था तो भाई ये सलमान खान भी है भाई। अब वो आप ऊपर नीचे कर ले वो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज है, बट बोथ ऑफ देम गोटेड इन इंडियन बॉलीवुड कम्युनिटी। तो भाई इधर आपको अगेन फेस करना पड़ेगा एक मैसिव टारगेट, एंड भाई चिप्स वुड बी in favor of us, maybe would be against us. There are vulnerabilities जो बैंक के against expose हुई। We did not have a good game in the first half, although we did manage to score the goals, but काफी vulnerabilities खोल के दिखाई। Carlo Ancelotti is a better manager than 10 of Warsaw Company at this point of time, but I think we have to just make sure of that कि कोई गलती पिच पे ना हो। It's a very controversial question, but there are few players that I definitely would want, especially given our injuries. Yamal being one of them. I think Yamal is a phenomenal talent. Being Spanish supporter as well, I love Yamal, even though he doesn't play for my club. I also like Kubasi. I think Pau Kubasi is one of those players that we could definitely use, especially because we've had these injury issues and all of that. So Pau Kubasi would fit right in and bring in sort of stability in the back. And who wouldn't like Lewandowski on current form? Yeah, the way he's playing, the way he's come back, he's just phenomenal. So I think ये दो तीन में से दे दोगे तो El-Clasico काफी वन साइड हो जाएगा हमारी तरफ। वाओ, None. I might sound cocky, Ankit bhai. I might sound cocky, and अभी नहीं तो कभी नहीं। I trust in my lads. अगर एक Casado जो कि apparently La Masia reject हो सकता था आज Xavi के अंदर, he did not get the minutes. I think I want to trust that guy. I know there are better players in Real Madrid squad, superstars, but at this point of time they deserve my respect, they deserve my love. Even one of the most hated players कह सकते हो या फिर not trusted player इनाकी पेनिया probably, still भाई मेरा बंदा है भाई, मेरा BKL है, मेरा बारसा का लौंडा है। So I don't want to be cocky here, मैं cocky नहीं हो रहा, मैं all I'm saying is कि I want to put faith in my players because these are the guys जिन्होंने मुझे भी टेबल पे टॉप रखा है। They have given me one of the best nights in the past
9 years. I think Bayern के against वो win इतनी huge है हमारे लिए. हमने Champions League उसके बाद से नहीं जीता है. Probably the last big win I think that I celebrated like this was against Liverpool, जो हमने उस Liverpool को 3-0 हराया था, and everything went downhill since then. So वो उस win के बाद मुझे लगता है ये Champions League में हमारी सबसे massive win है, and for that I would not take anyone. Yes, आप ये मुझसे question last year पूछे होते या season के start में पूछे होते, I think मैं last time भी पहले कई बार answer कर चुका हूँ. There were players जो कि मैं खुले मुंह पे बोलता था, भाई this player I want, but at this point of time my boys are doing very good and I want to trust my lads. Fair point, absolutely. लेकिन वही ना, even मैं रियल मैड्रिड फैन से पूछा तो even there it was like, क्योंकि बार्सिलोना में यंगस्टर्स इतने हैं, so that anyone would love to invest, but वही ना कि Hansi Flick has given that belief not just to the players but to fans itself, क्योंकि it doesn't matter whether you're a big name, अगर आप perform करो in the team you're there, and that's the best part. I mean, if we don't win La Liga and win the Champions League, there will not be much disappointment. But yeah, of course, if we don't win La Liga, it's a huge disappointment. It's our bread butter. हमारी चाय बिस्किट है यार. चाय पार्ले-जी के बिना जिंदगी कैसे जिए जाए? So for us, it's very important to win. And you're right. I'm very surprised the way they've turned around their team so quickly. एक manager के आने से mentality change हो गई है बार्सिलोना की, and very quick off the blocks. By the way, like we've been pretty good as well. It's not that हम लोग ने बहुत सारे matches हारे. It's just that we've dropped points in 3 games. तो हमारा unbeaten in La Liga, so you have to give it there also, considering the amount of injuries you had. तो I think कहीं ना कहीं वो भी credit का definitely पात्र होगा. And ideally you would think that कि unbeaten है तो they should be first, but given due credit to Barcelona and amazing the way they've come back, just started the league so strongly. Even the one of the earlier games where they scored 7 goals, and then of course the Bayern game, they're looking very strong. I'm not going to deny it. I'm not going to say they're not strong. They're very strong and very threatening. So it'll be interesting to see how we can sort of counter that. फेथ तो आया डेफिनेटली अंकित भाई, बट एक विन के बाद और 10 मैचेस इनटू द सीजन, इन टोटल मिला के कितना 13 मैचेस इनटू द सीजन में मैं नहीं कह सकता वो भाई बारसा ने ये कर दिया वो कर दिया चैंपियंस लीग जीतेंगे. व्हाट आई हैव फेल्ट एज अ फैन इज कि भाई मैं अपनी टीम में ज्यादा फेथ रख पाता हूँ, मैं अपनी टीम को एंजॉय कर पाता हूँ खेलते हुए देखना, बिकॉज लास्ट टाइम भाई पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से देखा बाबा वो एंजॉयमेंट की वो फील चली गई थी, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. हम ग्राइंड कर रहे थे विंस, ठीक है फाइन, जावी में वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसिव टाइटल जिताई थी, एंड दैट वाज अ होल डिफरेंट वे ऑफ फुटबॉल. वो इतना डिफेंसिव सिक्योरिटी होना, ग्राइंड करना, 11 1-0 के विंस लेना उस पूरे कैंपेन में, एंड दिस इज वेयर वी आर आउटस्कोरिंग टीम्स, आउटस्कोरिंग जितने पॉइंट्स नहीं है टीम के उतने तो हमारे गोल्स हो जा रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट इन दिस बार्सा, बट इट इज लाइक बर्निंग कैंडल्स ऑन बोथ एंड्स. अंकित भाई ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है, ये जो इंटेंसिटी है, आप देखो ये बीच सीजन में भी फटा था, एक बार इम्प्लोड हुआ था उस असोना वाले मैच में. हांसी फ्लिक भाई रियलाइज किए थे कि भाई टीम में अभी वो डेप्थ नहीं है तो उनको चेंज करना पड़ा था स्क्वाड, एंड वी लॉस्ट दैट गेम अल सदार पे 4-2 ओसासुना वाला. एंड ये मल्टीपल टाइम्स होगा इस सीजन. देयर वुड बी टाइम्स जहां पे आप प्रेशर कुकर ने यार, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ रहा है, आप प्रेस कर रहे हो, हर मैच में प्रेस करो, एक पॉइंट टाइम पे सीटी बचनी है तो वो 1-2 मैचेस बचेगी. एंड आई थिंक क्योंकि ये लीग है, बार्सा कैन अफोर्ड टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाई विनिंग दिस गेम becomes much more important for us, because you can afford to let the pressure off later on in the games जब आप कर पाते हो, because you can't go invincible from here on. कर दिया तो भाई that would be next thing, unimaginable होगा. But even practically speaking अकित भाई ये मैच जीतना इसलिए important है कि this will give you a stable 6 points gap 10 game into the season. That would be crazy good. आगे आप जाके मैच अपने उस हिसाब से बैलेंस कर सकते हो. Definitely 6 point. मैं agree करता हूँ आपसे, and form is a thing. You rather they may take advantage of that. It's definitely affected Jude Bellingham's game, and obviously because Bellingham had a free space to run in, jo abhi is filled with Mbappe, and Mbappe is also dropping to the left, so he's also hampered Vinicius's game in certain aspects. And Vinicius and Bellingham had such a great chemistry last season that they were very unselfish with each other. Mbappe is still trying to find his way in, तो वो एक one-upmanship का जो है तरीका वो अभी भी है, वो थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक वो जाने में, maybe half a season or 1 season के बाद we will see them gel together. I love Jude Bellingham. I think he is a great character in the dressing room, great character on the pitch. He's a must-have person. But वही इंग्लैंड वाली प्रॉब्लम आती है कि everybody tries to be the main character in the team. जहाँ पे टीम को जरूरत है गोल्स की तो सब लोग ट्राई करते हैं गोल मारने की. My best 11, I mean, it's pretty straightforward. It's not too much to think about because we don't have Courtois. So Lunin in goal, Mondi because we need a really good defensive left back. Mondi, Militao, Rudiger, no Carvajal, so Lucas Vazquez. For me, Lucas Vazquez slots in. He did a great job in the previous season's Clásico. Midfield of Modric,
Jude and Fede. You can't drop Fede for me. Modric brings in that stability and that sort of, even though he's old and all of that, he's still got that with him. And up top, the three Devta who will try and finish: Rodrigo, Vinny, and Mbappe. So that's a pretty standard. I think that's what Ancelotti wants to work. Maybe you could bring in a Ceballos, Tchouaméni, Camavinga somewhere in the mix to stabilize this team. But I think Ancelotti wants this team to work. So I hope that for his sake it does work. मतलब fair enough, लेकिन वो ये आपने बोला कोर्टोवा नहीं है. Again, there are rumors already saying कि Rodrigo might be a question mark as well for this game क्योंकि he came off I think limping if I'm not wrong. लेकिन considering even then अगर है नहीं है, मतलब I was thinking कि just because of this game, I know Real Madrid is Real Madrid, आप घर पर खेल रहे हो, but I thought there are a lot of rumblings कि कहीं ना कहीं इस गेम के लिए you could have Tchouaméni playing center back or Militao going right back, or even आप right wing में खेलो Vasquez को just to kind of cover that left wing of Barcelona, especially the Rafinha factor, right? Don't you think that probably could be एक चीज जो आप करोगे in terms of strategy? You see any? So that's right. I mean, I looked over it because I don't want Militao at right back. I want Militao slotted in the centre back position. I like Tchouaméni did a decent job as centre back last season, but again, it was not like it's not his his proper position. I want Tchouaméni either in the starting lineup as a defensive midfielder or on the bench coming off giving that extra pace rather than playing him in a position that he's not very comfortable in. So no, for me, mere liye to nahi hai, but Ancelotti could do it. You're right, and play and Fede has been great. Fede Valverde has been great on the right wing, so he could even do that. Or he play Ada Güler over there. You never know. So that is definitely the question mark on the right hand side. Both right back and right winger is a question mark, and that's the only sort of moving thing that you would, because again, for example, मैं throw करना चाहूँगा, obviously being someone who has a soft corner of AC Milan and having seen this role, Brahim Diaz, I think work rate के हिसाब से I think probably he gets a little bit more brownie points, so maybe he could be that filling क्योंकि he's supposedly back, लेकिन वो ये कितना match fit है right now we don't know yet. I have been in and around कि मैं फ्रेंको को खिलाऊं कि ओल्मो को खिलाऊं. That is the only concern. बाकी पूरी टीम मेरी सेट है, मुझे पता है कि कौन खेलेगा बैक में. It will be the whole टीम जो हमने पिछले मैच में खिलाया था, कोई चेंज वहां पर नहीं है. बट आई थिंक क्योंकि हांसी फ्लिक ने कहा है कि भाई चेंजेस नहीं होंगे, बट गेम का अप्रोच बदल सकता है. कोई नोइंग के सामने टीम डिफरेंट है. बायर्न के अगेंस्ट अप्रोच अलग था, उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी. वो एक चैंपियंस लीग का गेम था, ये ला लीगा का गेम है. यहाँ पे इट्स नॉट अ नॉकआउट गेम, इट्स नॉट डू और डाई एज वेल. सीजन लॉन्ग है अभी भी, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भाई देयर माइट बी चेंजेस इन द 11. बट मैंने अपने खुद की ड्यू डिलिजेंस नहीं की अभी तक टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू गो. शुड वी गो फॉर अ maybe conservative approach जहाँ पे आप फ्रेंकी कसाडो को खिलाओ, which will give you control in the midfield, knowing के सामने मॉड्रिच खेल सकते हैं, because अगर मॉड्रिच is there you would definitely need a player like Frenkie de Jong in the team. But still जो drop भी कर सकते हैं. Remember, Frenkie is someone who can drop very deep क्योंकि आपका high line was an issue in Bayern, to some extent, right? Absolutely. And यही चीज है, when I go back and think okay, Pedri भी यही करता था, but Pedri is not as silky as Frenkie. एंड बेटर होगा कहना कि प्रेस रेजिलिएंट नहीं है फ्रेंकी जितना. एंड इस मैच में क्योंकि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैड्रिड अपने प्रेस को सुधारेगी, अप टॉप से किलियन एम्बापे, विनीशियस और कोऑर्डिनेटेड प्रेस करेंगे. जूड बेलिंगम थर्ड मैन बनते हैं राइट हैंड साइड से प्रेस करने के लिए. सो ऑल ऑफ दैट जस्ट यू कम टू थिंक ऑफ इट, वुड इट बी बेटर कि आप कसाडो फ्रेंकी के साथ जाओ ताकि आप डीप से बॉल प्रोग्रेशन अच्छा कर पाओ, और अप टॉप आप पेड्री को खिला दो, और एल्स यू वांट टू पुट डैनी ओल्मो इन अप टॉप, थोड़ा अटैकिंग हो जाएगा, पेड्री को डीप खिलाओ. सो भाई मैंने ये पूरा बॉल इन कोर्ट ऑफ हांसी फ्लिक छोड़ दिया है. ही विल बी द डिसाइसिव गाय एंड वो डिसाइड करेगा जो बेस्ट होगा. जस्ट ट्रस्ट द गफर. लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूंगा दैट पेड्री जब आया ना फ्रेंकी इन मिडवीक, भाई वो नेक्स्ट लेवल, मतलब ही वाज शो बोटिंग भाई. नेक्स्ट लेवल. डीएसटी की याद आई. The reason we were able to beat them so convincingly in the last, because for a longest time they've had a very son of the soil, बहुत ही बार्सिलोना का बंदा, बहुत ही इमोशनल जावी कोच थे उनके. तो जब आप बहुत ही किसी चीज को लेके इमोशनल है, आप प्रॉपर्ली प्रैग्मेटिकली सोच नहीं पाते, या एक क्लियर वे में आप सोच नहीं पाते, जो हैंसी फ्लिक नहीं है. हैंसी फ्लिक इज नॉट अ बार्सिलोना मैन. He's coming from outside. He's a German mentality guy. He had to set the house trick, and he's done that to his credit. So pragmatism is going to be our biggest thing that you have to fight against. On the pitch, I mean, the duel speak for itself. Yeah, whether it's Lewandowski versus Rudiger, whether left wing pe you have Mbappe and Vinicius going down, and Kunde is there. So these midfield. Again, they will always say that because they have so much La Masia blood in the midfield that they have a very good, strong midfield, and we will always argue that we have Ballon d'Or winners in our midfield. So वो एक हमेशा रहेगा. I think
on the pitch, these are the things you have to look out for. But the one that I'm personally looking forward to is the Leva versus Rudiger, because both characters, both in good form, and if Leva can do a Leva like he does against Real Madrid when he did even at Dortmund, then Rudiger will be in a spot of bother, as they say. बिल्कुल. And I think Vinicius Junior maybe has a point to prove just 2 days before the Ballon d'Or. Having said that, or not that he hasn't proven already. Absolutely, Barca is not a defensive team. Very open है for the sake of it यार. आप देखो XG को conceded हमारा है, that is around 10 जो हमने इन मैचेस में जनरेट किया अपने अगेंस्ट, and 10 गोल खाए हम. तो like for every XG against you have conceded a goal. तो statistically maybe we have generated more XG. 26 XG हमने जनरेट किया है, 33 गोल्स मार रखा है. So XG को ओवर परफॉर्म किया है फ्रंट पे, और पीछे हमने कंसीड भी किया है. बट द थिंग इज कि आप देखो बैलेंस इसका, कि भाई जीडी आपको बताता है इसका बैलेंस, कि भाई जीडी हमारा सबसे ज्यादा है लीग में. सो दैट टेल्स यू कि भाई बार्सा हैज बिकम इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ गोल. एंड कहीं ना कहीं ये हम बार्सा का गेम ऐसा है, यू कांट गो एनी वे अराउंड दिस मेथड. उसकी वजह से ही आप हो जहां हो, तो आई थिंक इट प्रोबब्ली मेक सेंस. इफ यू कंसीडर Chouamani प्लेइंग एज अ डीएम, बिकॉज़ मेरे ओपिनियन में Chouamani वुड बी प्लेइंग दिस मैच. Chouamani के अगेंस्ट यू नीड समबडी हु इज ग्रेट इन इवेडिंग द प्रेस, हु इज ग्रेट इन फाइंडिंग द स्पेसेस, एंड दैट गाय इज Dani Olmo for us. He's great in finding the spaces and linking up top. तो ये जो बैटल है Chouamani और Dani Olmo की, ये बहुत क्रिटिकल होगी. मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया है कि भाई Pedri would be one of the best players on the pitch. मतलब मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि Pedri का गेम अच्छा होना है इस मैच में, then Barca would be able to play their best game. तो Pedri को निखर के आना है, and for Pedri, because that is in the first thirds of the build up, वो बेस्ट होना हमारा. And I think ये जो बैटल की आप बात कर, it will be very key. Plus भाई Yamal, again we have to speak about him. Yamal Mendy वाले साइड पे, Mendy को कितना वो पिन करके रखता है, because you can't allow Mendy to go up. Rafinha कितना Vasquez को पिन करते हैं, because again Vasquez is not your right back. वो खेल रहा है positioning wise वहाँ, but he apparently goes up and crosses डालेगा. तो क्योंकि Rafinha लेफ्ट विंग हो गए, पिन करेंगे वो उनको लेफ्ट पे. जितना आप इनके दोनों लोगों को पिन कर पाओगे, उतना आप इनके बॉल्स को कट ऑफ कर पाओगे इन बिहाइंड, बिकॉज Kylian Mbappe, Vini, आपको पता है पेस, एक रन एंड यू आर डन फॉर. Probably नहीं, ठीक है, makes sense. We can do better a little bit, but I think yeah, perfect है, no problem यार. Modern एक चीज जरूर बोलेंगे that गोलकीपर में भी था कि why not have two Real Madrid goalkeepers. On the other hand, ये भी हो सकता था midfield, क्योंकि midfield and Barcelona we know that the go-to team of Barcelona probably first choice होना चाहिए था. ये एक debatable point है, but I'm glad कि भाई ज्यादा disagreement नहीं हुआ, which is kind of a pleasant surprise, but always good to have you जी भाई. Obviously आप predictions के मामले में तो I'm pretty sure you'd be sitting on the fence right now, लेकिन you've already kind of said it. You are expecting this to be a performance जहाँ पर आप expect करते हो Barca to kind of almost like be the main team in the way the match goes, right? In terms of कैसे जाएगा. Absolutely. होता है ना, आप जब शर्ट पहनते हो तो आप बटन्स बंद करते हो. हमने नीचे से बटन बंद करना स्टार्ट किया है, एंड एक बटन ऊपर का खुला बच रहा है. सो दैट इज व्हाट आई होप फॉर. वो ऊपर का बटन बंद करिए, शर्ट को सही करिए, and आराम से you go forward in the season, head held high, and you take chances, you finish those chances. आगे वाले मैचेस होंगे, you take days to rest, chill out करो, and आगे वाले गेम्स आएंगे, you take one game at a time, and that's all. तो बस वही चाहता हूँ, बटन बंद करना है. ये मैड्रिड मतलब easier said than obviously it's Real Madrid, with all due respect. हम पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ क्या होता है उनके अगेंस्ट, but I hope कि एक अच्छा मैच हो. So good luck again to my fellow rivals, that's all I say. बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग वीक पोटेंशियली फॉर ऑल द बार्सा सपोर्टर्स, लेकिन ऑल द बेस्ट टू ऑल द रियल मैड्रिड सपोर्टर्स. हम तो भाई पीछे बैठकर आराम से एंजॉय करने वाले मैच, लेकिन we'll see for the review as well and lots more. Always a fan channel for see you all. Check out the fans channels below. Thank you. Peace out guys.